So if I'm audible and visible, just write in the comment section, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, yes sir, you're audible, so that we can move on. As we all know that daily at 7 p.m. we come up with the daily current affairs, and today is 21st March and we are here with this daily current affairs. आवाज आ रही है both on YouTube and app? Okay, so just before moving on, there's a small announcement. Those who are preparing for CLAT 2022, hardly 2-3 months is left. This is a crash course. You can go for this crash course. Call on this number or mail us here. इस पर कॉल कीजिए 9650052904 पे, या इस पर मेल कीजिए supported by BYJU'S Exam Prep पर. Okay, yes sir, you're audible. Okay, fine. What are the benefits of this crash course? You will be taught by NLU alumni, day-wise study plan, weekly performance test, faculty counseling and guidance session, live classes, etc. will be there. ठीक है? So these are the benefits of this crash course. Okay. As we all know, we give you questions. You have to read the question carefully and then answer it accordingly. So this is the first question in front of you. Whatever you are answering it, you have to tell me the reason before answering. So आपको reason भी बताना है. This is the first question. I hope you are aware. Yes, good evening everyone. Good evening guys. I hope you all are aware that something related with this was in the news about the Covishield and all. Okay, read it and then answer it. Your भी correct है इसलिए E. All of the above wrong. It's from 12 to 16. First wrong is from 12 to 16. Shreya Jan is saying one wrong. Okay. All of the above. कुछ लोग all of the above बता रहे हैं, कुछ लोग A भी बता रहे हैं. Okay, let's see. अच्छा, जब तक और लोग आंसर करें, कैन यू प्लीज टेल मी दैट कोविशील्ड हैज बीन मेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, विच बॉडी, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी? कोविशील्ड ओरिजिनली किसने बनाया है? बिकॉज लास्ट टाइम इट वाज आस्क्ड अबाउट कोवैक्सीन इन क्लैट 2021, सो दिस टाइम दे कैन आस्क अबाउट कोविशील्ड आल्सो. व्हाट इज द राइट आंसर? जूही फ्रॉम ऐप इज सेइंग टी. ओके. What is who is making Covishield? Anyone? Serum Institute. But Serum Institute is making in India. Fine. Serum Institute of India is making Covishield, but originally it has not been made in India. It is from some other country, made by some other organization. What's that? Serum Institute. AstraZeneca. Ashutosh Ranjan is saying Bharat Biotech is being Covaxin तो बना रहा है. अरे इतना बार पढ़ाया है. Serum Institute of India Pune has taken the license and is making in India. Fine, agreed, but originally it has not been made by Serum Institute. It is not completely indigenous. Covaxin को आप कह सकते हो, जैसे Covaxin is being developed by Bharat Biotech India Limited and ICMR. This was asked in CLAT 2021. Now they can ask this one. Germany, Oxford, AstraZeneca. Ashutosh Ranjan is saying AstraZeneca. Yashasvi Agrahari is saying. So Ashutosh Ranjan, Muskan Bano together you can see, or Yashasvi together is right. देखो कोविशील्ड ओरिजिनली जो है किसने बनाया है? ओरिजिनली इट हैज बीन मेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. पता होना चाहिए सर जी, तो हम पढ़ाया है इतना बार, इतना मेहनत किया इस पर. प्लस एस्ट्राजेनेका टुगेदर हैज मेड दिस कोविशील्ड. एस्ट्राजेनेका इज अ यूके बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी. इंग्लैंड की एक दवा की कंपनी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, दोनों ने मिलकर कोविशील्ड बनाया है. इन इंडिया सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इज मेकिंग. सो ओरिजिनली सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे नहीं है, ओरिजिनली ये है. ठीक है, सो प्लीज 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 रिमेंबर इट. नाउ the question is about NTAGI, that is National Technical Advisory Group on Immunization, has said
दैट कोविशील्ड के बीच जो गैप होता है, अर्लियर इट वाज 84 डेज का जनरली गैप होता था, 12 to 16 week का, now it has been reduced to 8 to 16 weeks after first dose. This was an article, I think it came everywhere. So vaccination advisory group recommends Covishield second dose after 8 weeks after first. ठीक है, so just remember it. This is right, this is right. NDAGA is of course under Ministry of Health and Family Welfare. So basically all three are right. So the right answer is E. E is the right answer to this क्वेश्चन. ठीक है, सो याद रखिएगा कोविशील्ड कौन कौन कंपनी बना रही है, कोवैक्सीन पूछ चुके हैं, तो ये सब सवाल न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए सर जी. ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. Those who are watching my 5 PM paid batches can very easily answer it because उसमें मैंने डिस्कस कराया है. This is about ICJ. Yes, good evening everyone. जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एक बार फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो. Yes, people are writing D. Dalveer Bhandari, Ayushi, Adiba, Laksh, Ali, Shreya, Amal, Tanya, Muskan, Ashutosh, Yashasvi, Supriya, Nisha. हाँ, इंडियन जज रशिया के गेम्स होस्ट किया. यस, सोनाक्षी सिंह, रितेश चौधरी, हेमंत, प्राचीश, अमीन, अंकित, नानुष्का, यू ऑल आर राइट. हाँ, आशी फ्रॉम ऐप. यस, the ICJ voted 13:2 because there are 15 judges in International Court of Justice. 13 said that Russia is violating international law, it should stop, whereas the other 2 did not say this or voted against it. है ना? ICJ is headquartered in The Hague, Netherlands. That is correct. It is the only UN organ to have headquarters outside New York. Yes, other 5 headquarters United Nations organ is in New York. The 6th one is in The Hague, in Netherlands. So that is right. There is no Indian judge. Yes, there is a judge, Justice Dalveer Bhandari. He is currently a judge in ICJ and he is an ex-Supreme Court judge. Okay. First thing, this is not India's vote. Okay. Some people may say that this India voted against Russia in ICJ. Please do not use this statement. This is an absolutely wrong statement. An Indian judge voted against Russia in ICJ, which does not mean India voted, because when you write India voted, it means it's Indian government's position. So this is not Indian government's position. This is a judge. He is an independent to Indian government, right? So do not get confused. So D is the right answer. So India's stand on Ukraine war is tragic. This was an article written by Subramaniam Swamy, and I think he's a BJP leader. He himself has written it. So D is the right answer to this question. Okay, so let's move on to the next one, the question number 3. We're asking which of the following is correct. जो लोग देख रहे हैं एक बार प्लीज प्रेस द लाइक बटन. Whoever is watching, please press the like button once. People are saying A. Lakshu, Tanya, Ali, Adiba, Sonakshi, Yashasvi, Ashutosh, Muskan, Asmita, you all are right. Okay, the Indian judge on the ICJ, former Supreme Court Judge Justice Dalveer Bhandari, voted against Russia. This is a correct statement. We have never seen a precedent of ICJ from India. This statement is wrong. There was one Indian who has been the president of ICJ. What is his name? अभी मैंने जो 5 PM वाली क्लास किया होगा paid batches, he can answer it. B is wrong. It's Nagendra Singh. Yes, Shreyas Jain, very good. It's Nagendra Singh was a judge of ICJ. He once became a president of ICJ. There is no concept of chief justice, but there is a concept of president instead of chief justice.
ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एक्चुअली। अभी मैं जो पेड बैच ले रहा था, बाई मिस्टेक आई सेड दैट आईसीसी एंड आईसीजे आर इन द सेम बिल्डिंग। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आई विल क्लैरिफाई इन द पेड बैचेस ऑल्सो। मैंने गलती से बोल दिया था कि आईसीसी और आईसीजे एक बिल्डिंग में नहीं, एक सिटी में जरूर है, बट इट्स अ डिफरेंट बिल्डिंग। सो दे आर इन द सेम बिल्डिंग, द सेम सिटी बट डिफरेंट बिल्डिंग। ओके, सो प्लीज आई एम वेरी सॉरी, प्लीज करेक्ट इट। ठीक है, डिफरेंट बिल्डिंग में। ओके, ICC can be considered as a subunit of ICJ? No, ICC is different from ICJ. It is not a subunit. ठीक है, ये independent है। तो these all three statements are wrong. This is the right statement. Okay? Yes. So International Criminal Court, यहाँ लिखा हुआ भी it is distinct from ICJ. So don't bother it. It has no relation basically. देखो अब मैं दिखा दूं, दिस इज ICC's बिल्डिंग, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स बिल्डिंग, एंड दिस इज पीस पैलेस बिल्डिंग। यहाँ पर एक्चुअली दो चीज का बिल्डिंग है। आई गॉट एक्चुअली कंफ्यूज, सो लेट मी क्लैरिफाई इट। यहाँ आपको ICJ का बिल्डिंग मिलेगा और एक और चीज का ऑफिस मिलेगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑफिस मिलेगा। सो दीज टू यू विल फाइंड इन वन बिल्डिंग, दैट इज पीस पैलेस बिल्डिंग। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका बिल्डिंग ये वाला है, सब द हेग में ही है, ऑल आर इन द हेग, but this is International Criminal Court. So actually I was teaching in paid batch and by mistake I said कि दोनों same building में, so please correct it, है ना? Okay. So the right answer, let's move on to the next one. Yes, Nagendra Singh was the president of ICJ. The next one is, देखो और भी ICJ के जजेस रहे हैं, जैसे जस्टिस BN राव साहब रहे हैं, RS पाठक रहे हैं, दलवीर भंडारी। सो दलवीर भंडारी इज राइट नो, है ना? The next one is question number 4, which is in front of you. Read it carefully and then answer it. Anyone? Yes, Justice Rao was first. Yes, Shreya Jain, very good. Huh? B, कुछ लोग D बता रहे। See, first of all, I am asking incorrect. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गलत कौन सा है। It has not promised anything like this. Very good, fantastic. Adiba is right. I have got the right answer. The incorrect statement is C. Russia is not a member of RCEP. China is the member. ठीक है। Japan has requested India to join RCEP. Yes, of course. There's an article which came in the Hindu world page, international page, and it says Japan still hopes India will rejoin RCEP. Japan cabinet official says. अब देखो इसमें अगर आप अंदर जाना, so they have mentioned it in detail. India will be treated exceptionally as a founder member, and if India is willing to negotiate to re-entry, Japan would be making happy. फाउंडर मेंबर उसको मान लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा वहां के एक मिनिस्टर ने, जापान कैबिनेट सेक्रेटरी शिकाता सेड दिस, है ना? सो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। इनके हिसाब से ये भी सही है कि उनको मान लिया जाएगा, बट लेट्स सी वेदर आरसीपी ऑल द अदर नेशंस विल एग्री और नॉट। आरसीपी में चाइना इज द मेंबर बट रशिया इज नॉट द मेंबर, एंड आरसीपी इज टोटल 15 मेंबर नेशंस। ठीक है, आई वाज आस्किंग इनकरेक्ट, सो सी इज इनकरेक्ट। तो yes, these are the all members of RCEP, 15 members। ठीक है, ओके। और यहाँ पर रशिया इसके ऊपर है, चाइना के ऊपर, विच इज नॉट अ मेंबर। इंडिया वाज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मेंबर, बट फाइनली इंडिया सेट की नहीं मेंबर बनेंगे। सो दिस इज RCEP। जापान इज देयर, साउथ कोरिया, चाइना, देन आसियान नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल। ठीक है, यस, हाँ हाँ, यस, हाँ, रिक्वेस्ट देखिए इनका स्टेटमेंट है, इंडिया विल बी ट्रीटेड एक्सेप्शनली एज अ फाउंडिंग मेंबर। दिस इज व्हाट दे सेड, जापान। ठीक है, वही चीज को मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है। इट इज सेड दैट इफ इंडिया ज्वाइंस,
इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अ फाउंडर मेंबर, वही स्टेटमेंट मैंने उठाया। ओके श्रेया, हाँ। So this RCP का full form Regional Comprehensive Economic Partnership. This is the full form of RCP. Yes. Why India said no? Mayur Jaiswal, there are a lot of reasons. उसको बताने के लिए it will take a lot of time. I have explained in the paid batches in detail about RCP. The next one is question number 5. शॉर्ट में ये समझ लो, मयूर जायसवाल की इंडिया को लॉस ज्यादा हो रहा था ज्वाइन करने से, ज्यादातर फायदा हो रहा था। That's why India decided not to join it. The question number 5. So whenever you are reading the question, RCP form 2-3 years back, I think 2019 or somewhere, finally concluded. Himadri, Norway. Shahjan is saying Himadri, Norway. Yes, fantastic. Shreya Jan is absolutely correct. I am asking 2 questions here. ठीक है, एक तो X पूछ रहा हूँ और इसके लिए I have given 4 options and then I am asking again another question here. What is Y in the above passage? इसमें Y क्या चीज़ है? ठीक है, and I have got only one right answer. Let's see how many of you can answer. Himadri, Norwegian, yes. Adiba is saying Himadri, Norwegian, yes. So actually there was an article, India hopes for permanent presence in Arctic. ये कुछ दिन पहले article आई थी and that is why we are discussing it. So Arctic में, Arctic Ocean में we are having a research center, what is called as Himadri Research Center at Svalbard in Norwegian Archipelago. बताते हैं ये क्या है। जो दक्षिण गंगोत्री है, भारतीय है, ये सब आपको अंटार्कटिका में मिलेगा। दीज आर रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका, बट हिमाद्री जो है वो आपको आर्कटिक में मिलेगा। लेट मी शो यू। सो देखो, दिस इज इंडिया। इस रीजन को आई होप यू आर अवेयर आर्कटिक ओशन कहते हैं, यस। और यहीं पे आपको मिलेगा। नॉर्वे के ऊपर जाओ एंड यू विल सी समवेयर हियर, दिस इज हिमाद्री आर्कटिक स्टेशन सावलबार्ड आइलैंड में है ना, सावलबार्ड सैंक्चुरी पे, हियर यू विल फाइंड इट। इट वाज इन द न्यूज, सो दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, before moving on, those who are preparing for CLAT 2023, I hope you are aware this hardly 7-8 months is left. Go for this course, call on this number or mail us here. And expert guidance by NLU alumni will be there. Day-wise study plan, one-on-one mentorship, weekly performance test, etc. will be there. Okay, so go for this course. The next one is question number 6. It came in the news, I think. Yes, yesterday in Indian Express है ना। एक्चुअली होली की वजह से कुछ आर्टिकल्स छूट गया था, कुछ क्लासेस, सो मैं उसको भी कवर कर लिया हूँ आज। ठीक है, यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। जो जो लोग देख रहे हैं प्लीज प्रेस द लाइक बटन वंस, एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। Yes, very good. Ayushi, Akash, Vishakha, Case, yes. Gargi, Venkat, Adiba, Yashasvi, Supriya, Priyanka. Okay, why I'm asking this question? This is related with which topic? मतलब अभी कौन सा कोई एक इशू था वो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, उसी की वजह से। Yes, agreed, but why it is very much in the news? Related with Kerala cinema से related है this. I hope you are aware of this POSH Act है ना। So it's basically Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act. Yes, this is famously called as POSH Act. So basically in Malayalam film industry these things have been coming in news, so that is why we have discussed it. Okay, yes, go and read about it. It's an Indian Express article, got published yesterday. Okay, today हाँ, मलयालम मूवी वाला, यस, आयुषी श्रीवास्तव, राइट। हाँ, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में
जो भी बताएगा फुल फॉर्म भी बता देगा. व्हाट इज OROP? राइट इन द कमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाई इट इज इन न्यूज. OROP क्यों न्यूज में है? एनीवन? One rank, one pension. Yes, Supriya Pandey, very good. Ayushi Srivastava, Ashutosh Ranjan, Shreya, Muskan, ABS. There's a judgment related with Supreme Court, I think 3-4 days back. It's a pension scheme for military personnel. One rank, one pension scheme जिसको कहते हैं. ठीक है. This is OROP. ठीक है. So actually what happened, I tell you in short, the people filed a case because against the government's scheme of OROP, but Supreme Court said we are not going into this matter because it's a policy decision. So technically it is not unconstitutional on the face of it, so that's why we are not going in detail about it. Okay, the details will be in the paid batches. What is OROP? इसको हम लोग discuss करेंगे in detail about it. Okay, let's move on. You can read here also. May not form homogeneous class. This is in live law. Let's move on to the next one, the question number 8. Soldiers retire early, that causes discrepancy. LLB student, I am asking questions from today's The Hindu and Indian Express. Generally उस दिन के The Hindu और Indian Express से सवाल लाता हूँ. Okay. This was very much in the news, I think 7-8 months back जब second wave था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ में IPR वगैरह चल रहा था और उस वक्त we had discussed about it. Yes, very good, Supriya Pandey, very good, fantastic. Ayushi Srivastava, Anushka Jaiswal. Yes, Gargi, Prachi. Yes, it's India and South Africa, not South Korea. तो बेसिकली IPR वेवर की जो बात किया था वो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने पहले डिमांड किया था. ओरिजिनली इंडिया एंड साउथ अफ्रीका डिमांडेड IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर in WTO. ठीक है, बाद में US and EU have supported, okay, but it's mean the idea was India and South Africa. So basically D is the right answer. Yes, TRIPS waiver, very good Anushka, right? Huh? Gargi, you are right. Yes. So there is an article in first page in The Hindu, I think before Holi शायद, हाँ ना, Thursday Friday को थी. Patent rights on COVID-19 vaccines may be waived for 5 years, and that is why it was very much in the news. Let's move on to the next one, the question number 9. This was also in the news. UN General Assembly approved a resolution for setting X as the International Day to combat Islamophobia. What is X? My autocorrect is so bad. अच्छा, आपने लिखा कुछ चला गया कुछ और. What is the right answer, guys? Yes, 15 March proposed by Pakistan. Yes, very good. Sunday, क्या नाम था उनका? Weekly Sunday Masala. Yes, you are right. Gargi, Adiba, Mayur, Jaiswal, you are right. Asmita, Manas. It's 15th March. So B is the right answer to this question. Okay, International Day to combat Islamophobia. This proposal was introduced by Pakistan. Okay, so Banshika from app is also right. B is the right answer. Ashi is also right. Yes. Asmita, you all are right. B is the right answer to this question. Yes, India said that why only talking about one religion? We should talk about all the religion phobia. Hai na? Okay, let's move on to the next one, the question number 10, which is in front of you. Okay, let's see how many of you can answer this question correctly. Let's see. ये question थोड़ा सा complicated होगा. This is slightly complicated, twisted, but I want to know from you. I know ये थोड़ा सा complicated है.
बट लेट्स सी। आपको ये बताना है कि x कौन हो सकते हैं, हु इज दिस x? वेरी गुड, ऑसम, Ayushi Srivastava, very good, fantastic, and Supriya Pandey has also answered it. Very good, awesome, literally. Ayushi Srivastava and Supriya Pandey, awesome answer. Yes, it's D. Weekly Sunday Masala में answer किया, Attorney General of India. X has the right of audience in all courts of India. यहीं से आप समझ सकते हैं, we are talking about Attorney General. He has the right to participate in proceedings. यानी he can come inside the Lok Sabha and Raj Sabha and sit along with MPs. वो एमपी के साथ आके बैठ भी सकते हैं, बट ही कैन नॉट वोट नहीं कर सकते, बट ही कैन कम सिट इन लोकसभा एंड राज्यसभा. ही अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट. विच तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते शायद यू कुड हैव आंसर्ड इट, और हमको बहुत परफेक्ट आंसर बहुत कम टाइम में दो लोगों से मिल गया, एक आयुषी श्रीवास्तव से, एक सुप्रिया पांडे से. ऐसे बाद में और भी लोगों ने आंसर किया, यशस्वी, अनुष्का, मयूर चौधरी, आशी फ्रॉम ऐप. बट एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग आंसर कर दोगे, बट अगर आपने कर दिया तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द विकिपीडिया पेज ऑफ अटॉर्नी जनरल. ठीक है, बेसिकली चूंकि आप लोग इस फील्ड के हैं जाओगे तो आपको ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCT, ALAT, SLAT, BLAT, अगर ये सब की तैयारी कर रहे हो 2022 के लिए, गो फॉर दिस कोर्स, कॉल ऑन दिस नंबर और मेल अस हियर. इस पर कॉल कीजिए, इस पर मेल कीजिए. आई एम ऑल्सो टीचिंग. So thank you everyone, thank you for watching. Please press the like button, share and subscribe to our channel. Thank you everyone, thanks for watching.